Welcome to everyone from class 7th, subject English, topic Lal Ded, textbook page number 10. Dear students, कल आपने पढ़ा लाल देद के बारे में। वो इस वादी की बहुत ही बुलंद हस्ती मानी जाती हैं। लाल देद डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के पंपूर गाँव में 1320 ईस्वी में पैदा हुई और 1392 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत कर गई। वो मुख्तलिफ नामों से जानी जाती हैं, लल दैद, लल आरिफा, लल ईश्वरी। तो आज हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। शी नॉट ओनली बिकम ए मिस्टिक ऑफ द कश्मीरी शिवाइट सेक्ट बट ऑल्सो ए सूफी सेंट. She created the mystic poetry called walks, literally sayings or speech. Each walk containing 4 lines is a short poem structured around a theme properly known as Lal Walks. Her poetry is considered the earliest composition in the Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature. Her works represent the best teachings for mankind in the modern world. They inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions and races. These works describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul, that is to be one with the Almighty. In one of her works, she talks about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms. Her poetry is rooted in humanism and is a treasure of wisdom, love, truth, peace, and eternal joy. It reveals the real essence of religion. Lal Ded greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah alayh, the famous Kashmiri poet, saint known for his great poetry. She not only became a mystic of the Kashmiri Shiite sect but also a Sufi saint. लाल देद वो न सिर्फ कश्मीरी शिवा मसलक की एक जोगी बनी बल्कि एक सूफी फकीर भी बनी. She created the mystic poetry called walks, literally sayings or speech. इसने सूफियाना शायरी की जिससे वॉक कहा जाता है, यानी इसके लफ्जी माने हैं कहावतें या तकरीर. Each walk containing 4 lines is a short poem structured around a theme properly known as Lal Walks. हर एक वॉक में 4 मिसरे हुआ करते हैं जो एक मुख्तसर नज़म होती है और जो किसी मजमून के बारे में कही गई होती है. आम तौर पर इन्हें लल वॉक कहा जाता है, लल वॉक्स. Her poetry is considered the earliest composition in the Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature. इसकी शायरी यानी लाल देद की शायरी को कश्मीरी ज़बान में सबसे पहली तख्लीक माना जाता है और जो कश्मीरी अदब की तारीख में एक अहम किरदार निभाती है. Her works represent the best teachings for mankind in the modern world. इसके वाक मौजूदा दुनिया में बनी नौ इंसान के लिए बेहतरीन तालीमात की नुमाइंदगी करते हैं. They inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions and races. वो सभी मजहबों और कौमों के लोगों के बीच इत्तेफाक व इत्तेहाद तलाश करने की हौसला अफजाई करते हैं.
These walks describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul, that is to be one with the Almighty. یہ واک انسان اور خدا کے بیچ رشتے کا اور انسانی روح کی بہت ہی گہری تڑپ کا ذکر کرتی ہے. In one of her walks, she talks about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms. اپنے واقعوں میں سے ایک واق ہے، وہ اس دنیا کی بے ثابتی کی بات کرتی ہے اور لوگوں کو صلاح دیتی ہے، یعنی خاتون لوگوں کو صلاح دیتی ہے کہ وہ خود کو دنیائی خوشیوں اور لالچیوں کے قابو میں نہ آنے دے. Her poetry is rooted in humanism and is a treasure of wisdom, love, truth, peace and eternal joy. اس کی شاعری انسانیت کی علامت ہے اور عقل، محبت، سچائی کا ایک خزانہ ہے جو سکون، خوشی اور سچائی کے لیے زندگی کی کھوج کا ذکر کرتا ہے. It reveals the real essence of religion. یہ مذہب کی اصلی روح کو ظاہر کرتا ہے. Lal Ded greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Allah, the famous Kashmiri poet saint known for his great poetry. لال دید نے شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، جو ایک مشہور کشمیری شاعر تھے جنہیں ان کی عظیم شاعری کے لیے جانا جاتا ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی، کل اور ملیں گے. تھینکس.